हेलो स्टूडेंट, हम सोशोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 130 एमसीक्यूज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग एमसीक्यूज हम क्लास वाइज डिस्कस करते रहेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। सो इंक्रीज इन पॉपुलेशन को क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए, डेवलप्ड द एरिया ऑफ साइंटिफिक एग्रीकल्चर। ये जो इमेज है कुछ थोड़ी सी धुंधली है, ये एक क्वेश्चन की ही है, तो इसीलिए मैंने इसे एडिट नहीं किया है। ओके, नाउ ऑप्शन बी, डेवलप द एरिया ऑफ इंसेंटिव कलेक्टिवेशन। Option C, did not affect the old technique of agriculture. Option D, had nothing to do with the life individuals. Now right answer is develop the area of scientific agriculture. Okay, क्या करना है? एरिया को बढ़ाना है और साइंटिफिक एग्रीकल्चर करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीलिंग टू लीड सेटल्ड लाइफ इस्टेब्लिश्ड। सो जो सेटल लाइफ इस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या फीलिंग होनी चाहिए? ऑप्शन ए, द विलेज कम्युनिटीज। ऑप्शन बी सो इन हियर राइट आंसर इज द रूरल कम्युनिटीज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, with the specialized due to the division of labor in agriculture stage. Option A, more industries expand. Option B, value of trade increase. Option C, employ level of employment to move up. Option D, more conflict across the society. So लेबर का जो स्पेशलाइज डिवीज़न है वो क्या होगा? तो वो होगा वैल्यू ऑफ ट्रेड इंक्रीज। ओके, जो ट्रेड इंक्रीज करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द सेंटर्स ऑफ ट्रेड ओइंग टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? ऑप्शन ए, विलेज। ऑप्शन बी, सिटीज़। Option C, town. Option D, deals. Now right answer is option B, cities. Okay, now next question, in the large scale unit। तो large scale unit क्या होता है? Option A, the relationship between labor and employer become more sweet. Option B, the relationship between labor and employer become more interpersonal. Option C, the relationship between employer and employees did not undergo any change. Option D, none of the above things happened. Now right answer is option B, the relationship between the labor and employee become the more impersonal. Now next question, who defines city as the relatively large, dense and permanent settlement of the socially heterogeneous individuals? Option A, Ripley. Option B, Lewis Worth. Option C, Murdoch. Option D, Morgage. Now right answer is Lewis Worth. Okay, किसने डिफाइन किया है सिटी को? लुइस वर्थ ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is the correct about the Angevin society? In here we will study about the Angevin society. So some example given below. So
one is correct answer that will be chosen. Okay, now the people had impersonal contact with each other. Option B, the society was conflict ridden. Option C, neighborhood relations were weak. Option D, the help worship nature is not nature's good. Now, right answer is option D. The pupil worship nature and not nature's gods. Okay, the sentence is a correct sentence. Now, next question. One of the one of the significant feature of the post-Angevin period was option A, cultivation become more scientific. Option B, people began to live comprehensively simple life. Option C, land got divided into small fragment. Option D, land holding become big. Now right answer is option D. Land holdings become big. Okay. Now next question. Which of the following was not true of the Angevin society? अब इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो ट्रू नहीं है एंजेवियन सोसाइटी को लेकर के? ऑप्शन ए, इट गिव्स प्लेस टू feudal system. Option B, it gives to setback to feudal system. Option C, it changed feudal system. Option D, none of the above. Now right answer is option A, it gives place to feudal system. Now next question. In an Angevin society, the people option A, had no faith in religion. Option B, were busy in economic activity. Option C, were religiously weakened. Option D, had blind faith on religion. Now right answer is had blind faith on religion. Okay, now next question. क्या करते हैं? अपने रिलीजन्स के ऊपर अंधा विश्वास करते हैं. Now next question. In Angevin society, the pupil is the begin had. Option A, no desire to possess private property. Option B, had caused the having private property. Option C, did not allow any person to possess land of one's cultivation by him. Option D, frequent conflict over the possession of private property. Now right answer is option A, no desire to possess private property. प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती थी उनकी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यू टू द राइज ऑफ एग्रीकल्चर मीन. ऑप्शन ए, चेंज ऑफ फ्लैश डाइट नोमेडीज टू द डाइट मोर वेजिटेबल्स. ऑप्शन बी, डिड नॉट चेंज टू डाइट एट ऑल. ऑप्शन सी, स्टार्ट ईटिंग रोस्टिंग फिश. ऑप्शन डी, abandoned flesh eating, start eating milk product. Okay, so right answer is option A. Now next question. Pupil started leading the more settled life in the option A, agriculture state. Option B, postal stage. Option C, hunting stage. Option D, none of the stage. Okay, सो राइट आंसर इज एग्रीकल्चर स्टेट. ओके, मोर सेटल लाइफ किस में होती है? एग्रीकल्चर स्टेट में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सम ट्रेड्स वेयर डेवलप्ड ड्यूरिंग द एग्रीकल्चर स्टेट डेवलपमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग सच अ ट्रेड? ऑप्शन ए, पॉटरी मेकिंग. ऑप्शन बी, वीविंग ऑफ वूल. ऑप्शन सी, weaving of cotton. Option D, all of the above. Now right answer is option D, all of the above. Okay, now next question.
Agriculture was the leading occupation till. Option A, mined 18th country. Option B, mined 19th country. Option C, mined 17th country. Option D, end of 19th country. Now right answer is mid 18th country. Okay. Now next question. In the agriculture stage developed a pupil where? Option A, aware the group of activities of joint work. Option B, not aware to group activity and joint work. Option C, aware of the group activity but not joint work. Option D, no aware of group activity but worked jointly. Now right answer is aware of group activity and joined the work. Now next question. Place and simplicity characteristic of the village life. Mark out among the following which you think is the real reason for it. Option A, for the unablest character of the village. Option B, their ignorance of the world outside. Option C, the blind faith on the traditions. Option D, they talk their occasions as the way of life. Now right answer is option D. Okay. Now they talk their occasions as the way of life. Now next question. What among the following does not contribute to the rural economy? Option A, collagen industries. Option B, animal husbandry. Option C, availability of better equipment. Option D, private money leading practice. Now right answer is D, private money leading practice. Now next question. The feeling of class consciousness is necessary to constitute as filling the blanks but not. Option A, class and caste. Option B, caste and class. Option C, state, group and class. Option D, state, caste, state, group. Now right answer is class and caste. Okay. Now next question. Filling the blanks is family extend beyond the nuclear family. Option A, extended family. Option B, joint family. Option C, nuclear family. Option D, new local family. Now right answer is extended family. सो स्टूडेंट ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। आई होप आपको ये एमसीक्यू समझ में आ रहे होंगे क्योंकि सोशियोलॉजी से लेके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन थे उनको हमने इन 150 एमसीक्यूज़ में डिस्कस किया। आई होप आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।